Hello students, good morning all. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. So guys, where we have done in the units and dimension. Uses. Last class uses we have done. Okay. Yes. We have to note some points also. So like okay. So जैसे इसमें so guys yes Virok yes 2 kg water plus 1 second is how much? We can't add. We can add. So that means two quantities getting added or subtracted. Must have same dimensional formula. Must have the same dimensional formula. So we can multiply quantities having different dimensions. Quantities having different dimensions. Having different dimensions. The dimension formula. Like guys, linear momentum, mass into velocity. Okay, first point. If two quantities are getting added or subtracted, they must have the same dimensional formula. First point. और guys, जैसे जो है sign of something. So this argument is an angle. This argument, the sign of some quantity. So this quantity, so y is equal to sign of quantity. So this quantity must be dimensionless, guys. This quantity must be, because it's an angle dimensionless, theta L by R. So sign के अंदर जो quantity will be there, that must be dimensionless. Say y is equal to e to power some quantity, and this also quantity e to power number, it must be there. So quantity must be dimensionless here also. Please copy this once, please. So where did you last 2 days you practiced also, no? Friction sums. Yes. Okay. Yes, sir. So guys, if you have copied this one, students, this one copied, no? Yes. One Yes, second. yes, Sir. Okay, okay. So if you have copied, let's go to the booklet. Booklet screen. So here, yes, this say this equation. This question is P plus A by V square. V minus B is constant. थोड़ा सा question is little पूरा complete नहीं है.
p plus a by v square and v minus b is constant. Guys, यहाँ पर जो है this p denotes the pressure here. P is pressure and v is volume. Guys, v denotes यहाँ volume here. Please write this question. हाँ, और जो है Capital V only, right? ये हाँ ये भी कैपिटल V है गाइस, ये दोनों ही कैपिटल बोथ आर दिस वन. यहाँ पर it must is capital V. Okay. Van der Waals equation. So this you have studied. Okay. Sir, P plus in a school by we v have in school you have done. Okay. P plus a by v square and v minus b is constant. By suppose if I ask you to find the dimensional formula of b, So what would be the volume. dimension? By And b volume. minus b has to be volume. Volume का dimension formula क्या हो जाएगा? L L close to 3. cube. L L m L3 हो जाएगा. And p plus a by v square. Now if I ask you to find the dimensional formula of a, So A by V square must have the same dimension as pressure. yes, Yeah, dimension so- of p must be equal to dimension of a by v square. Therefore, dimension of a must be equal to pv square. Yeah, pressure is defined as force by area. Pressure is force by area. Force के लिए ठीक है क्या था? Mass into acceleration, meter per second square. Mass और meter per second square divided by area. So guys, यहाँ से हमें मिल रहा है ml minus 1 t minus 2. This is pressure और v square मतलब L to power 6. So क्या हो जाएगा? Dimensions of a क्या हो जाएगा? ml 5t minus 2. L5t minus 2. Oh, यहाँ पे क्या पूछा है? Units of a पूछा है. All right. Okay. Yes. Oh, okay. ठीक है यार, units of क्या हो जाएगा? Unit of a पूछा है, मैंने क्या कर दिया? हाँ, चलो ठीक है. प्रेशर का क्या होता है यार? यहाँ पे किस यूनिट्स में बातें करें? डायन. So it is in CGS. So Okay, they are going for the CGS units. प्रेशर का डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम मतलब सेंटीमीटर क्यूब और उसका 3 टाइम उसका स्क्वायर सेंटीमीटर 6. तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 9 centimeter is to 4, option B. 9 centimeter to power 4. Okay. So guys, first question, please write this question as an example. और a का हमने डायमेंशन वाला b का निकाला, a का निकाला एंड यूनिट b जो है ऐसा यूनिट ऑफ a, सॉरी CGS यूनिट ऑफ a. Okay. So the same exercise let us do for this one. Second question also. We'll do the same exercise and this is the question here. You want to find the dimensions of t. Sorry, t is time. T का dimension तो क्या निकालेंगे? Time है and a and b. Yes, a and b. so the dimensional formula of x and bt square will be same. So x by t square for dimensional formula will be b. Okay, good आरव. तो इसमें जो है so yes आरव. Dimension of क्या हो जाएगा? Dimension of guys, first one if you have copied I will erase this one. चलो इसको हटा देते हैं. So dimension of x is equal to dimension of at is equal to dimension of bt square. भाई x is the distance तो l हो जाएगा यार.
A का डायमेंशन, इससे हमें इन दोनों को कंपेयर करेंगे. Yes, so we'll get the dimension of A as क्या हो जाएगा LT minus 1. फिर इसको और इसको कंपेयर करेंगे, डायमेंशन ऑफ B कितना हो जाएगा LT minus 2. और यूनिट भी वैसे ही निकाल लेंगे यार कंपेयर करके, राइट. यूनिट भी तो हम उसको कंपेयर इक्वल करके और डायमेंशन इक्वल. चलो ठीक है. फिर जो है ठीक है. नेक्स्ट, if you have done this one, or I will erase this one. Let's go to the next one. अब ये 7th वाला जो है इसमें x is 3y(z square), y बताना है if x and z. ओके, डायमेंशन का क्या. ओ यार देखो यहाँ पर दिस अभी के लिए दिस क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड टू यू. भाई आपने कैपेसिटेंस पढ़ानी है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ा है. ओके, सम स्टूडेंट्स ऑफ दे हैव स्टडीड, बट ये अभी नहीं पूछ सकते. गाइस यू आर अंडरस्टूड ना, कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड you have not studied, so now we cannot ask you. Once we है ना, once we teach you, तो हाँ उसके बाद कर सकते हो. तो कैसा होगा if x and y dimensions, आपको किसका y का निकालना है. What is small x and z दिया हुआ है. oh, y का निकालना. तो guys ये वाला आगे पढ़ोगे, but let me write you an equation कैसे करोगे, है ना. कैपेसिटेंस के लिए guys after studying electrostatics, Q is equal to CV. Q is equal to CV और वोल्टेज को ना वर्क डन बाई चार्ज. तो वर्क जो हो जाएगा ना, वर्क आपको क्या निकालना है, C का निकालना है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, Q is equal to, Q is charge here only. हाँ, तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होके डिवाइडेड बाई C कैलकुलेट करना है गाइस आपको. सो C का ऐसे करके निकालोगे, बट नॉट नाउ. वी कैनॉट आस्क यू आफ्टर. लेकिन हाँ, आफ्टर यू विल बी टॉट कैपेसिटेंस, उसके बाद ऐसे करोगे. फिर मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के लिए गाइस ये वाला एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू ये, ठीक है, BIL बिल से. हाँ, फोर्स का पता है, I इज द करंट विल बी चार्ज बाय टाइम. ये हो गया. या I के लिए तो है ही, I का तो यही है ना. ओके, सो ठीक है, ये वाला यू डोंट हैव टू डू, सिंपली B का निकल आएगा. इस तरीके से विल कैलकुलेट. बट अभी क्वेश्चन देना भी होगा तो वी हैव टू प्रोवाइड यू दिस रिलेशन एटलीस्ट. ओके, yes students, so ठीक है, I will erase this one. I'll go for the next question. देखते हैं. 8 dimensions of mu naught and epsilon naught. Yes, अभी तो epsilon naught के लिए आपको we have to give you Coulomb's law, और फिर ये परमिटिविटी वाला भी देना पड़ेगा. एंड ऑल्सो जो है स्पीड ऑफ द लाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 12th का लास्ट में आएगा. स्पीड ऑफ लाइट इज 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन होता है गाइस. आगे विल डिस्कस. म्यू नॉट ना, ये वाला आगे होता है, ये वाला पढ़ाएंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में. परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आएगा. permittivity, Coulomb's law, permittivity of free space. So we won't get these questions then. Yes, we cannot ask you because it doesn't make sense. बच्चा पढ़ा ही नहीं है magnetic permittivity क्या है, doesn't know. So they can't just like give the formula. Yes, अगर कि मान लो देखो, हाँ ऐसा बन सकता है एप्सिलॉन नॉट के लिए. So उसके लिए they will have to give you Coulomb's law relation. Q K F is equal to 1/4 pi epsilon naught. Q1, Q2 are the two charges divided by R square. ये relation देंगे. Now we can ask you. Correct? Yes.
अभी के लिए तो we cannot ask, it doesn't make, वो wrong हो जाएगा बच्चा अभी स्टार्टिंग में और उसको पूछ रहे हो. But yes, after you study the chapters, they will not give you the relation. That's why I said ये chapter जो है last तक जाएगा. हाँ. So okay. फिर क्या था? Yes, ninth वाला. Force is given by this dimensions of A and B. Yes, ईशान, ये वाला कैसे होगा? The ninth question. So dimensions of the ninth one, right? Yes, yes, yes. हाँ. So dimensions of F will be equal to dimension of AT equal to dimension of BT square. Yes, correct. हाँ. जैसे अपन ने अभी पहले किया था सेम में. Okay, students. Next try 10th वाला. Let me hide the question. 10th question, students. The position of a particle is given by, position is x. X is the position, guys. X is a function of time. T तो छोड़ दो, हाँ. X is a function of time. और V naught is a constant. तो निकालना है, alpha भी निकालना है. So सबका dimension निकालना है. So let us find the dimensions of all the given quantities. सिर्फ हमें x का पता है भाई. B naught निकालना है, alpha निकालना है, A निकालना है. Yes. So guys, yes, I will ask. Yes, Avanti, how should we find the dimensions here of the alpha first? Sorry, sir? Yes, the alpha, find the dimensions of alpha. How will you get the value of alpha, dimensions of alpha? We have a hint from here. So alpha will be a constant, right? Alpha is a Alpha constant. T will be dimensionless. Okay, Ishan. Alpha E T to will be power dimensionless. minus E to alpha power, T is. yes. E to power some quantity, Arab. Yes, sir, yes, sir. This has to be a dimension. It has to be a pure number. It has to the number. It's a dimensionless quantity. So that means alpha T is a dimensionless quantity. M0, L0, T0. अगर alpha, this is a dimensionless quantity, तो alpha का dimension क्या होगा? ये वाला T नीचे? Sir, T minus 1. T minus 1. So now alpha का तो आ गया. Yes, Anya, how should we find the dimension of V naught now? So Sir. the dimensions of alpha and V naught will be. Dimensions of, please tell again. So we found out alpha, so we can equate it to V naught.
the dimension. Yeah. Dimensions of So alpha, so V naught is given as a constant. Yeah, so they won't have dimension. a constant can have a dimensions. Why not? So, So जैसे वो था ना gravitational constant Yes, sir. is yeah. equal to G m1 m2 by r square. So यहाँ पे G gravitational constant that had dimensions. So यहाँ पर ये V naught का कैसे होगा रहा? How will you calculate this one? V naught का dimension. Sayuj, how will you calculate? So do we expand the bracket and then equate it with So LHS? V naught into A upon Oh, alpha sorry. will be हाँ. पहले तो A का dimension. Yes. हाँ Okay, सर, okay, एक का dimension भी लगेगा. A का Sir, A dimension will be सा- dimensionless now because e raised to minus alpha t is constant. Yes. So e to power, guys, e to power this quantity is dimensionless. ये पूरी dimensionless है और इसके साथ subtract हो रहा है. So This we must just be- equate V naught upon alpha to xt. So the dimension will be Correct. same. Sir, I got So- V naught as L. Yes. So ये वाला जो है ऐसा हो जाएगा ना? V naught by alpha का x का dimension is equal to V L1. naught by alpha because ये तो गया है dimensionless है. So V naught will be simply x alpha. X is what? X is length. L1. और ये t minus 1. LT minus 1. Yes. ये is it correct guys? देखो भाई. Correct now guys? Yeah, now. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So ये वाला everybody understood. ठीक है. फिर भाई क्या है next? The dimensions of physical quantity x in the given equation is. ये तो easy है भाई. Eleventh one, right, sir? 11th one, yes. फिर after 11th one, if you are done, 12th वाला try करके बताओ. Option C. yes. I got Option C. For 11 is option What? C. Okay. 11th done. Okay. 12th. After 12th, then guys, ये वाला. फिर next. After 12th, example 13th भी करना है. Problem 13. Next page. जिसका ये वाला हो गया है, they can go for problem 13, 14, 15. Also 16th. So for 12 is it mass? 12th का 1 minute answer. का ए आ रहा है भाई, देखो sir. क्या हो गया. ए आ रहा है क्या? ओके अंश ए आ रहा है. ओके Oh, okay, so got it. Yes, sir.
1 minute, guys. You try this one. 1 minute. थर्टींथ का इस मैच हो रहा है ना 13th. Sir, in 13, the argument for sine is both omega and x by v minus k, right? 13th के लिए okay, this is the argument. Oh, the What y comes is the for sine? equation of wave. Okay, y क्या represent करता है ये नहीं दिया. Okay, y is the equation of a wave. Okay, the dimensions of k are okay. The dimensions of k are means guys oh ठीक है. तो ये पूरा dimensionless होना चाहिए अंदर साइन के अंदर का. Okay. Okay. So omega. So omega times will be dimensionless, right? So omega will be included in that, right? Omega and x by v For the minus k. 13th one, like if you just consider the inside bracket, you can solve it. Yes, yes. Omega x by v ना ये निशान ऐसा. This is the argument inside. So ये भी dimensionless होना चाहिए, ये भी dimensionless होना चाहिए, right? This one. So omega k must be dimensionless. So m0 l0 t0. So भाई omega का कितना है 1 by t है तो k का क्या हो जाएगा simply t हो जाएगा. Okay. So in this 13th question, like if we just took x dimension of x by v equals to dimension of k, since they're subtracting it, Then also we could have then done also we it. could have just done. Actually, we have Oh, to do it yes. that way. X by v का dimension is equal to k. K Yes. Yes, yes, yes. X is L and V is LT minus 1. Correct, Aishan? Good. Fourteenth is the next one.
So in the 14th one, the dimension of x square plus b, we'll take it as L raised to 2 only, right? As a whole. Oh, so okay, you are saying कि x square and they are adding up. So दोनों का dimension same होना चाहिए, right? इसलिए. Yes, sir. But like if we take the dimension of the whole denominator, then that will be L raised to 2 only, right? Yes, L raised to 2 because meter square plus meter square, 2 meter square plus 4 meter square is 6 meter square only. Yes, sir. हाँ, ऐड कर रहे हैं तो 2 kg plus 3 kg जो है डायमेंशंस वही रहेगा 6 kg 2 kg plus 3 5 kg लाइक दैट. सो ये वाला तो L2 हो गया. हाँ गुड, तो इससे तो L2 आ गया. अब जो है यू वांट टू फाइंड A का डायमेंशन ना. ओ ओके, सो वी आर हिंटिंग दिस वे. और ये वाला x है like this, A root x divided by L2 ऐसा. This is the energy. एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कर लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सब एक ही बात है. ml2 डायमेंशन सेम -2 और ये वाला L ऊपर आ जाएगा L स्क्वायर और ये वाला रूट ऑफ L नीचे आ जाएगा. एंड दिस इज A एंड यू वांट टू फाइंड A इनटू B. फिर B से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, जो भी आएगा. B is L raised to 2. ओके ओके, सो कितना आ जाएगा इसमें फिर सब इससे कैलकुलेशंस मिस्टेक कर रहा. Sir, answer is not matching. I'm getting A for 14th and like they've given B. वो आंसर नहीं हो रहा. ठीक है भाई. And it is So- solvents. ये कितना हो जाएगा? 4 minus 1 by 2. 3 by 2. 7 by 2. So m L to power 7 by 2 or t to power -2 is A, or A into B plus 2. तो m 11 by 2 और t -2 ऐसा होगा क्या? Okay. Yes, sir. I got it. चलो guys, ये वाला हो गया. Erase this one. Students, ये वाला everybody has copied, ना? Hmm. Okay, okay. Sir, after 14th, which one we have to do? Let's do 15th also. 15th. 15th, yes, 15th we can do. '15th, 16th. So guys, after 15th, 16th also. 17th also, let's try. 17th, 15th, 16th, 17th. 1 minute, guys. I'll be back. 1 minute.
Students got this one? 15th. Yes, sir. Yes, sir. Okay, get 15th. Then we're going to 16th one. Sixteen guys, now we do 16th one. Physical quantity is n into u. Yes, sir. So जैसे लेंथ का है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो कैसा रिलेशन होगा? So inversely. Inversely proportional. Inverse relation. Okay, okay. Next one guys, 17th. So in CGS, the system magnet of force is itna. In another system, the fundamental quantities are kilogram, meter, and minute. So guys, ये हाँ, to convert the magnet of the force is, say, वही approach, say magnitude of force is some x new units. So क्या हो जाएगा इस x new units is equal to कितना हो जाएगा 100 dynes. We used to do ना कि 1 Newton is equal to dash dynes, so x dynes each. So यहाँ पर 100 dynes is equal to the volume. So let's say x new units. Second step क्या होता है guys? What is the second step? Dimension formula? Yes, sir. इसका force का है, force का MLT MLT minus minus L1T minus. MLLNT new units minus 200 CGS units, L CGS units, T CGS units minus 2. So x की value क्या जाएगी? CGS units mass in the new units वो 100 भी है. L in CGS units divided by ये वाला sorry L in the new units or Tn minus 2. So guys क्या आएगा यहाँ पर? भाई इसमें मास सीजीएस यूनिट्स में कितना था 1 ग्राम और इसमें न्यू यूनिट्स में मास इज हाउ मच 1 kg 1000 grams और लेंथ इन सीजीएस यूनिट्स इज 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितना है मीटर. ओके इट्स मीटर ओनली. सो मीटर को 100 सेंटीमीटर कर लेते हैं और क्या ताकि डायरेक्टली यूनिट्स कट जाए न्यूमेरिकल वैल्यू बच जाए हमारी. एंड हियर यू हैव 1 सेकंड तो -2 है एंड दिस इज मिनट 60 seconds. तो गाइस कितना आ जाएगा 100 ऊपर है नीचे 1000 फिर 100 and this will go up as 3600. Yes students, क्या होगा आंसर? 3.6. 3.6.
So next guys, ये स्केल तो अभी केल्विन वगैरह का तो जो है you might have not studied. Guys, conversion जो है जैसे 18 सम में they are asking for the Fahrenheit cent वाला जो है आपने पढ़ा हुआ है क्या? जो है केल्विन में this is 273.15 plus C होता है. Yes. Yes. और concept you have done. this is 9 by 5 C plus 32. Yes, so done. Yes. This Sir. we done in 9th grade. Oh, this we have done. Oh. So there is also a general formula, right, for conversion of scales. Oh yes, sir. वो डायरेक्टली रख के हाँ, this will do in thermal expansion. Scales का वैल्यू रख के, ठीक है, लोअर पॉइंट अपर पॉइंट ऐसे करके जनरल फॉर्मूला को टाइम करते हैं. So what is that formula? Can you please tell me? Oh yeah, ठीक है. I will 1 minute. I will erase this one if you have copied this one, guys. ये वाला हो गया ना सबका? Yeah, sir. Yes, sir. Okay. तो उसमें ऐसा है लोग शायद ना, देखो जैसे कि मान लो वी हैव स्केल्स क्या क्या है. केल्विन का स्केल है, सेंटीग्रेड का है, एंड फ़ारेनहाइट है. दो रखते हैं शायद, वाटर बॉइल्स, बॉइलिंग पॉइंट, और आइस. ठीक है, इसमें जो है आइस के लिए आइस मेल्ट्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज 32 फ़ारेनहाइट, और ये वाला शायद 212, और ये वाला 273.15, 373.15. फिर जनरल फॉर्मूला में ना सबके इक्वल टू डैश ऐसा, हाँ मतलब ये रेशियो लिखना है. डिनोमिनेटर में क्या करना, अपर माइनस लोअर कर देना. जैसे इसका अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर कितना हो जाएगा इसका 373.15 माइनस 273.15, और इसका अपर माइनस लोअर क्या हो जाएगा 100 माइनस 0. यहाँ पे यू विल गेट 2 and 2 माइनस 32. सो बेसिकली क्या रहा है, इधर पहला वाला टर्म आ गया 100, ओके 100, और इसमें भी 100, और इसमें ये कितना आ जाएगा 180. 180. चलो ठीक है, ये कौन सा है, के वाला है, एंड दिस इज सी एंड दिस इज एफ. नाउ यू राइट k minus 273.15, फिर यहाँ पे लिखो c minus 0, और यहाँ पे क्या राइट f minus 32. Look, you all understood? Yes, sir. Thank you. हाँ. So जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा we can do. Next 19th one, guys. 19th. Oh, I will erase this one if you have copied. So this one done, guys. Nineteenth one minute, guys. The conversion factor to change from CGS to MKS.
Guys, ये conversion factor means they are asking that thing क्या कि one say one CGS units is equal to 1 CGS is how many SI है? yes like one CGS is equal to some X SI unit like this. Okay. So we want to find this one. So first step is this one. Second step क्या होगा फिर इसका? Dimension ना? Second one will be dimension. यार ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, उसको हटा देते हैं. Oh, force by area, yes, pressure वाला आ गया. MLT minus 2 divided by L2. So the dimension formula is ML minus 1 T minus 2. Okay. Yes, sir. All right. So ये क्या हो जाएगा? इधर तो 1 ही हो गया. MC LC minus 1 TC minus 2 divided by MS LS minus 1 TS minus 1. इससे ट्राई करो बस कुछ x क्या आएगा? 0.17. You're getting a second. Let's do 20th also. Okay. So this is power 1 mega. Oh, guys, ये capital M ना, they should have given. This is called as 10 raised to mega. 6. 10 to power 6. Yes. Megawatt 10 to power 6. Huh? So okay, 10 to power 6 watt. मतलब SI unit. What is the SI unit? Is equal to say X new units. Okay, X new units. And the quantity involved is power. Power is क्या हो जाएगा इस work done by time. Work done ML2 T minus 2 divided by time. Work क्या आ जाएगा force into displacement MLT minus 2 into L. So this will be ML2 T minus 2. This is work. और उसको time से divide करना है. So ML2 T minus 3. So 10 to power 6 MS SI units LS or MS by MN LS by LN, and this will be power 2 TS by TN or ELA minus 2. This is X. Okay, so guys ये वाला कैसे आएगा फिर यहाँ पर this is ये तो 1 kg divided by this is how many 10 kg और ये वाला LS 1 meter decimeter कितना होता है guys? DM is decimeter ना? 10 raised to minus 1. So 1 decimeter means 0.1 meter. Okay. It's 0.1 meter.
and this is 1 second divided by 1 minute, 60 seconds. And this is minus 2. This is plus 2. And that is -3 now. Minus 3. Oh, sorry, minus 3. Minus 3. Okay, minus 3. 10 to power 6. ये वाला तो नीचे आ गया 10 भाई. यहाँ पे क्या आ गया 0.1 का 10 ऊपर जाएगा वो, लेकिन 2 है. और ये 60 ऊपर आ जाएगा ना. 60 काफी बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा. गाइस देखो कितना आएगा इसमें. Ten to power 6, 10, 30, no, 216. 10 to power 3, yeah. 10 और ये हाँ 2.16 into 10 to power 12 क्या है जरा. Yes. Yeah, sir. I got it. नेक्स्ट गाइस देखो 21 क्या है. गाइस कैसे आएगा ये वाला. 21. You want to find the relations among mass.
इससे दोनों को डिवाइड करके वी कैन फाइंड मास वाला, इससे आ रहा है Yes, क्वेश्चन sir. I did force is equal to m2 into a2 and then solve. ओके ओके। सो इससे क्या आ रहा है आंसर बिलो इसका, मास के बीच Sir, में I am रिलेशन, called m2 by m1. दिस इज हाउ मच, ये 1 बाय ऐसा आ जाएगा ना अल्फा, इज एम 1 लाइक दिस वन, and this is pointing to which one, B option, yeah? Yes. Okay, correct, हाँ। And ये तो इसके लिए हो गया। How about length का कैसे आएगा? यार acceleration का कितना होता है? LT minus 2, LT minus 1, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। Sir, L won't cancel out. Oh, okay. So Sir, if we multiply it by Time. force and then वो इसका तो वो इससे टाइम का रिलेशन आएगा। ओके ओके वैसे if we multiply it by force, then we'll get something. A by V जो है 1 by T आ रहा है ना, हाँ विरोध, तो ये आ जाएगा ना फिर V by A, Yes, sir. V by A, so V by A, हाँ yes, V by A को हाँ तो डिवाइड कर देते हैं, V by A, V2 by A2, इससे आ जाएगा। वो यू आर आस्किंग फिर हाउ विल यू फाइंड, ओ बस अब तो आपके पास वो आ गया ना, यू वांट टू फाइंड लेंथ, सो आपके पास ओ यस हाँ, L2 by T2 is V2, right? So Yes, sir. L1 by T1 is V1, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। You want to find L2 by L1, we have T2 by T1 from here. Yes, sir. Yeah, length निकालना है ना, V square is equal to 2as ना dimensionally. Yes, sir. So अपन इसको हटा देते हैं ना यार, V square by 2a मतलब a ना, हाँ so L2 is directly ऐसे भी कर सकते थे, V square by V2 square by A2, L1 is V1 square by A1, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। Yes, Then also sir. we can find, हाँ चलो ठीक है। Twenty-two is also similar, units वाला ही है। Twenty-three. Let's try 23.
23 आ रहा है ना जगह में? Next 23. के बाद फिर students 23, everybody got? Virok 23, No, sir, I'm not. doing it. Okay, okay. What is it? 23 done. Okay. Yes, Yes. sir. Yes. 23. After 23, guys, we're 25. Let's say 25. So A 23 also getting, but 25. okay, जिसका dimensions match हो रहा है, that is the answer. So A Okay, okay. How about next 28? So 23 के बाद then go for 28 sum. So will we have this question? 20, which one? 28th one. Arav? What you're saying, Arav? So will we have this question? This kind of a question? Oh, you are saying कि इसमें जो है कुछ quantity given नहीं है क्या? Dimensionally constant volume V, V जो है volume of a liquid flowing per second. Oh, यहाँ पर ये थोड़ा सा ये हो गया, guys. ये जो है ना volume is volume per second, हाँ. This is volume. V denotes volume per second, guys. हाँ. और जो है pi और P is the pressure, हाँ, pressure. P is the pressure, force by area. They have not given here. ये इतना देना चाहिए था. Pressure का भी force by area और क्या क्या है? Eta, तो you want to, eta is given, okay. R is the radius, yes, radius R, ठीक है. L is the length, okay.
L is the length A6. Guys, अभी के लिए don't worry because ये जो है ना, this is nothing. This is ये आगे पढ़ेंगे. This is called as Poiseuille's law. This is study. 11th में होगा fluid में. Rate of volume flow is equal to pi delta P R to power 4 upon A theta L. ये आता है. This is rate of volume flow. So ठीक है. तो ये this will be derived also Poiseuille's law fluids में. Yes, sir. So ठीक है फिर and 31 31 वो 29th. What is 29th? 28 के बाद let's see 29th guys. So 29th में the usual notations, the following equation ST is U plus A by 20. तो ठीक है 29 तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड का करेक्ट फॉर्मूला U plus A by 2 into 2n minus 1. फिर if velocity, acceleration and force are chosen and for yes, let's do guys 30th करेंगे अपन. Yes, 30 will do. ट्वेंटी एट का गाइस कैसे आपने वैल्यूज रख के डायमेंशन रख के मैच कराया क्या? ओके 28 में आई गेस वी हैव पुट द वैल्यूज और जिसका LHS इक्वल टू RHS वैसे किया क्या? So you have to check the options. Okay, you are checking each option. Okay, you can or you can do that way also, but that will be lengthy, ना? Yes. ये वाला वो जो unknown मान के solve करना, right? That will be lengthy ना? और जो है remember we used to find relationship among the quantities, product calculation. तो वो lengthy है. इसके लिए ठीक है यार. ये 28 वाला ऐसे ही ठीक है. Values dimensions put करो which one matches. So what are you thinking about 30th? How you will do this one? The dimensioning formula of angular momentum, and this depends on this quantities. So L depends on some constant times v to power x a acceleration to the power y f force to the power. ये हो जाएगा और ये this is the angular momentum L angular और इसका dimensions they have given. Yes, ml2 t minus 1. इसका हटा देते हैं. वेलोसिटी का lt minus 1 lx t minus x lt minus 2 t minus 2 mlt minus 2 m l t minus 2. ये सॉल्व करना पड़ेगा. l to power x plus y t to power So x plus y plus z. यार ये वाला फिर सॉल्व करने में तो आई कैन मेक मिस्टेक हियर ना इक्वेशंस में. तो यही ठीक रहेगा वैल्यूज पुट अप करना ना. I will make mistake here. T to power a minus 2x minus 2y minus. So you can find out z by because there's only one z. Yeah, For there M. is one z. Z का एक ही है. So yes. z will be 1. That is one. Okay.
m का भी तो एक ही है, हाँ 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 अच्छा है ना। yes, 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 yes. z is 1 तो f to the power 1 इसमें और इसमें फिर अरे यार इसमें फिर वो क्या ना गड़बड़ चलो किसी एक में Then रख के you देख can लेंगे do simultaneous equation. करेक्ट हाँ फिर क्या है the largest m mass can be flowing through depends on velocity v and acceleration due to gravity अब ये भी वही वाला हो जाएगा फिर रख के देखना या फिर रख के देखना फास्ट हो जाएगा लग रहा है सॉल्विंग में मिस्टेक होता है यहाँ पर अक्सर चलो ठीक है 31 and then we have 30 next page में Oh, so you get the B option from simultaneous equation. से आ रहा है ओके 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 और ये वाला जो है 32 ठीक है ये तो ऐसे ही इसमें they should have given everything g का वैल्यू yes they have given yes हाँ तो यहाँ पर तो ठीक है यहाँ पर फिर यहाँ पर how you are planning to same thing क्या इसमें भी mass is mass 1 is equal to dimensions किसका है यहाँ पर the gravitational constant g this one to the power x m minus x 3x 3 minus 2x this power इसका power x इसका power y और c भी तो है इसको ठीक है इसको z कर लेते हैं क्या सो my यार ये भी तो बहुत लेंदी जा रहा सब में यहाँ पे इजी हो जाएगा कि नहीं होगा नहीं नहीं LT minus 1 तो LZ T minus Z यहाँ पे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा नहीं ठीक है सो गाइस इसमें भी वैल्यूज रखना है ठीक है पुट अप करके इसमें there is no shortcut. नो शॉर्ट करना हाँ ठीक है फिर आई गेस 33 34 35 सेम उसी बेसिस पे है 33 34 35 दे आर ऑन द सेम बेसिस वैसे ही है and now the limitations let's discuss the limitations if dimensions are given the physical quantity may not be unique as many physical quantities have dimensions so first point okay numerical constant have no dimensions k numerical constant okay 1 by 2 1 by 2 pi having no dimensions cannot be deduced by the method of dimensions so the method of dimensions cannot be used to derive relations other than yes product product type जो है ये कर सकते हैं जैसे s is ut plus half it square yes we cannot derive only product type can be और या फिर ऐसा वाला okay or the dimensional correctness of this can be checked okay the method of dimensions cannot be applied to derive formula in mechanics physical quantity may be dependent on more than 3 physical quantities this implies that the equations are less 3 mlt में है और 3 से ज्यादा क्वांटिटी से ज्यादा डिपेंडेंट आ गया तो गड़बड़ जाएगा however still we can check the correctness of the equation dimensionally for example 2 pi square root of I by ये वाला जो है कंपाउंड पेंडुलम में we will discuss 2 pi square root of I by mgl cannot be derived by the theory of dimensions but its correctness can be checked correctness कैसे चेक करेंगे dimension of LHS equal dimension of RHS Yes, sir. हाँ इससे तो these are the limitations then even if the physical quantities depends on 3 physical
quantity out of which two have the same dimensions, the formula cannot be derived by the theory of dimensions. Formula for the tuning fork. Oh, ठीक है, हाँ ये वाला जो है guys ये वाला आगे पढ़ेंगे theory जो है tuning fork का formula. Okay, so यहाँ तक तो ठीक है. Exercise में guys देखते हैं. What is there in the exercise now? Which of the following is not a unit of length? So radian. Radian. Yes, the unit of impulse अभी पढ़ा नहीं है. Okay. Impulse force into time. Impulse Into is equal time. to change in linear momentum. Impulse is equal to change in linear momentum. तो linear momentum अभी आपने पढ़ा नहीं है. ठीक है. Which of the following quantities have this dimension different from other three pairs? Oh, इसका dimensions अलग अलग है. Impulse So नहीं we से haven't पढ़ा done नहीं है. half of So we have Yes. not, yeah. So What Young's is Young's modulus we modulus? have done it. Modulus, we have not Yes. Sir, done. it has the same units as pressure only. Stress. हाँ लेकिन अभी पढ़ा नहीं है ना, ये last D में आएगा. Yes, sir. This we have not done. Even fourth question में देखो dimensions of viscosity नहीं पढ़ा है. So Surface till tension. 9th we have not done anything. Yes. Even 10th का भी जो है LCR कहाँ पढ़ा है अभी? Sir, so this chapter, Yes. like they can ask for any TWT in the future, like they can ask us. Yes, हाँ लेकिन उसमें जो है they will give you the मतलब अगर if they want to ask they can give you the relation and they can ask ऐसा. So Yes, what if sir. in empty they don't give? No, it cannot because students obviously they Bonus. हाँ नहीं claim हो जाएगा. Yes, हाँ bonus हो जाएगा. How about this one? Yes, 15 question तो you can do, right? Dimensions of G relation is given. 15 तक कर सकते हो and then 16th also yes. Dimensions of A, B we So we have did this calculated. question. Yes, we have done. Yes, sir. Solved examples. और ये वाला भी 17th ideal gas equation PV is equal to nRT. We did this in the last lecture. Okay. That one 19th का E is equal to H nu. E Planck's constant. नहीं, Planck's constant you have not studied. Sir, atomic structure we have done. Yes, we have We done have that. done. Oh yeah. जो है Planck's constant and this one. Joule second. Juice. Yes. Surface tension भी नहीं पढ़ा है आपने. Yes. Sir, even if you like given the formula and the units, still they won't ask us without giving the formula, right? No. Formula they will give and they will ask the dimension. ऐसा. Oh, sir. फिर 26th वाला can we do? The dimensions of V are. (26) Next 26 का यार ये इसका डायमेंशन सेम होगा and इसको ऐड करेंगे then that Both will be dimensionless. dimensionless. So dimension of BT is equal to dimension of CX is dimensionless. T minus 1. So हाँ B का डायमेंशन क्या हो जाएगा of T minus 1 या T minus 1 किसका होता है 1 by T. Frequency. तो ये नहीं पढ़ा है ना frequency I have not studied. Sir, we've Frequency done this So, in but we've done so second inverse. 7th standard, sir. Frequency 1 by time period. Yes. Oh, yeah. Yes, sir. Is it okay? All modes? No. Right.
Okay. So ICS think we done all- 8th, 7th grade. I Seventh, think. Yes, eighth, sir. Yeah, ninth. Yes, Seventh sir. we had sound chapter. Okay, okay. फिर जो है वंडरवॉल्स इक्वेशन ये वाला वही वाला हो गया भाई. This we did dimensions of a 28th one, 28th and 29th we same now. And how will you do 30th one? 28th 29th ठीक है, a and b निकाला हमने. How will you find the 30th one? 30. So that will be equal to PV, right? And then we Yes. can find it out. Yeah. yeah. The same dimension as Yes, P into V, pressure, force by area. Force by area Force Force into by length, L square. effectively. और ये वाला L क्यूब हो जाएगा. Force into L हो Energy, जाएगा. option A. Yes, energy आ जाएगा. Yes, yes, yes. Okay. ये तो हो गया 28, 32. 32 yes सानिया how you do वही वाला हो जाएगा ना. Yes, relation वाला. Force is equal to V to power So then we X, don't A know to the- power Y, or F to Young's power Z. modulus, sir. So we Yeah. don't know the formula for Young's modulus. Oh yes guys, Young's modulus नहीं दिया है. ठीक है ठीक है ठीक है. Young's modulus they will give, bracket में देंगे ना. If they want to ask it. फिर permittivity of free space electrostatics no. Permeability no. And So only C is one. solving. So do we ये just भी no. 1 by mu naught epsilon naught. C is the speed of light. लेकिन ये अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है ये वाला नॉट epsilon naught. So this also they cannot ask. Specific heat आपने पढ़ा नहीं है. Latent heat. Specific heat guys आपने वो सब कहाँ पढ़ा है क्या? कैलोरीमेट्री में Q is equal to ms delta T. Well, last year this Yes, sir. was Heat. there. MC delta T. Yes. This you have done? Okay, this is the heat. Yes. This is the heat energy. Heat, Mass, energy, specific heat, change in temperature. mass, temperature Kelvin में. Okay. And C I don't think ढूंढना है. we've done this in CBSE. In CBSE we haven't done this. Oh yes, we have done. Okay, correct. Even latent heat भी नहीं पढ़ा होगा. Delta Q is नहीं, equal The sir. to latent mass heat into in radius. So, 1960 we mass studied, into but it was latent heat. cancelled. Mass into latent heat. Yes. Yeah, 9th हाँ, ये cancelled. ICS was cancelled. Yes. Yes, sir. energy, mass, yes. ये Okay. वर्ड फ्री पढ़ा है. This you have not done. How about? Okay. So dimensions of latent heat, Boltzmann constant, potential difference V. No, ये तो दिया ही नहीं है relation. कुछ तो देंगे ही. Potential difference voltage. Work done by charge. Potential difference voltage. They have to give like this. Work done by charge like that. We did voltage, I think, in ninth Yeah, or in tenth. 9th grade we did ICS. But they have defined work done by charge. Yes. Work done by charge. 9th, 10th, both, sir. No. Yeah, we Yes, had sir. electricity. Okay. The Electric rest we field. have. Electric field no. ये नहीं किया होगा. No, sir. Force F force is equal to charge into electric field. ये नहीं पढ़ा होगा. Even magnetic field ये भी नहीं पढ़ा होगा. Magnetic flux भी नहीं पढ़ा होगा. Self inductance capacitance भी नहीं पढ़ा होगा. Q is So we equal to don't effectively don't have to solve anything in the booklet. So this is Everything is 11th out. booklet only, no? Yes. Yes, Yes. sir. Question. I mean, though for both the years, I mean, this will be used for. So then This why should is be it the in last module chapter. 1? It should be the last module, no then. Yes, sir. Yeah, units last and dimensions chapter. should be like taught in 12th grade and now. No. Actually, जो है, it is in CBSE for starting में. Yeah, CBSE was Plus- the first chapter. Yes. Plus- CBSE में it's easy. Even There's ISC, nothing- sir. And First CBSE, chapter. the level of Plus, things they ask is जो है, different. हाँ नहीं, plus उसके बाद जो है, जैसे हम कभी भी, suppose we start a new topic, whenever we define a new quantity, so we have to tell उसका SI unit, उसका dimensional formula, वो बता के आगे पूरा चलना है. So every time we get a new formula, we put it in like Dimension. MLT form. So every yes, time sir. we do a chapter, we come back to this chapter. Yeah. Yes, वो formula हाँ, formula discuss हो गया, that means they can ask you. So ये cheat है. फिर जो है, oh yes, ये
एरर का अपन को डिस्कस करना है गाइस. एरर विल डू प्रेशर ग्रेडियंट ना गाइस. ग्रेडियंट आगे फ्लूइड्स You में had आएगा. told in last lecture like gradient is differentiating with respect to length and Length, yes, length के respect में होता है. Change in pressure by length. Oh, this is the rate of change of pressure with length. The pressure by length is उसका dimensions. This can be asked. और यहाँ पर they cannot, क्योंकि वो example की तरह देना चाहिए था. They must have given the dimensions of this and this. So ये नहीं. फिर जो है yes, इसमें भी कई सारे हैं. Yes. No, ये वाला भी नहीं. ये भी डायमेंशन वाला ही हो गया. 60 सेकंड क्या है? 60 सेकंड. The dimensions of D are 60 सेकंड. गैस ये वाला कर सकते हैं क्या? Number of particles crossing unit area in unit time is given by n. Oh, this is given. Okay. Number by area by time. Okay. And ये क्या है? Number by volume. और ये वाला तो लेंथ है. This is length. Yes guys, D का सोचो कैसे करेंगे? How do you calculate D? Is it D? Which one is matching, Arav? So D. Okay. Please check the answer. Is it correct now? Yes, add this to T minus 1 ml. Okay. फिर जो है yes, so जो है can we do this one? ये वाला क्या है? 77. So it has to be dimensionless. AT by M, you want to find the dimensions of A. So AT by M is dimensionless. Yes, it is 0. Yes, sir. So say okay. Even 76 में तो ये सब दिया नहीं है. No, they cannot ask. But once you study, you know the approach कि कैसे guys जो ना हमें इसको deal करना है, right? So, Yes, sir. So ये तो ठीक है. Exercise 1. और बता exercise 2 में क्या चल रहा है? It's okay. Let's see. Oh. It's तो error वाला है. Significant figures, yes. So you have to identify the pair whose dimensions are equal. Torque सब तो पढ़ा नहीं है.
Torque and work option है. टॉर्क एंड यस टॉर्क वर्क का है सेम है और फोर्स एंड वर्क नो टॉर्क एंड वर्क physical quantities not having the same dimensions. Oh, ये नहीं पढ़ा होगा, ये सब तो पढ़ा नहीं है. इसके dimensions same, ये भी same. ये वाला guys ये केमिस्ट्री में ये एक डी ब्रोगली's इक्वेशन आएगा, lambda into p is constant. Yes, sir. We've done this. Lambda Atomic divided by mv. So yes, so momentum, this is Planck's constant. Lambda is the wavelength. So ये same नहीं Wavelength. होगा, not having the same dimensions. Obviously ये तो मेंस का है, इसमें they cannot give because जब तक तो student has studied all the chapters. So ठीक है इसमें. So for the ये वाला MP, it भी will be पढ़ा हुआ है, similar वही questions, आ but रहा है, like ठीक है. हाँ given रहेगा. So any new quantity cannot come. But concepts of dimensions they can ask. just so like they can give a formula from 12th and or like expect you to solve it, right? Like they'll Correct, give yes, the proper exactly. formula. Correct, हाँ. So ठीक है भाई, अब ये तो हुआ dimensions का. Let's start आगे का arrays वाला part. So I have sent one PDF. Ishan, can you please screen share or anybody? So the PDF you sent, one second. Yes, I have sent. हाँ. This one of the errors. Yes. Yeah, okay, let me just screenshot. हाँ. Can you see it? Yes. हाँ. Next page. इसमें one minute significant figures. उसके पहले जो है, let me open here also 1 minute. Rounding का yes. ईशान page 5 में rounding off. So guys यहाँ से start करते हैं. Yes. Guys rules for rounding off में जो है, let us write. If the removable digit is less than 5, drop it. Or more than 5, increase by 1. अब 5 है तो even में क्या होता है guys? Drop ना. जैसे let's say we want to round this number to 1 digit. तो 47.8 इसमें क्या हो जाएगा? This will be 1 digit. ये हटा दो यार, क्या मतलब एक 1 digit तक rounding करना है यहाँ पर. Say you are asked to do 1 digit. 47.8 और ये 47.862 है, 1 digit तक they have asked you to round. So 47.9. So let us write the heading, rules of rounding off. This you know also I guess. तो पहला point ये वाला हो गया, second point ये, and this is the third point. If the removable digit is exactly 5, even may drop. तो अब ये 5 हो गया यार, तो even है तो just 5 को drop कर दो, odd है तो इसको increase कर दो. So it always has to be even. The last one. ये हाँ मतलब अगर कि मान लो जो है 5 आ गया और राउंड करने वाला जो आगे का नंबर है is even, तो just drop 5. So the final answer will always be even if it's 5. Oh yes. हाँ.
So that's ठीक है. फिर उसके बाद जो है, let us come to previous pages. Yes, Ishan, please come to the previous pages first. में देखते हैं क्या है. So to the first page or Yes, to significant figure? first page, please try it. First page. Yeah, one second. Okay, thank you. So इसमें जो है, लीस्ट काउंट, वो लीस्ट काउंट मतलब कहाँ तक जो है एक्यूरेट है. सो जैसे दिस इज अ मिलीमीटर स्केल, तो ऑब्वियसली ठीक है, इसका लीस्ट काउंट क्या आएगा, पॉइंट जो है 1, ये वाला 0.1. since you know, please scroll down. yes, फिर यहाँ पर जो है वर्नियर कैलिपर में, ठीक है, और आगे तक जा सकते हो. जैसे इसमें ये वाले स्केल में, सेंटीमीटर स्केल में यू कैन गो टिल 1 डेसिमल, वर्नियर में ठीक है, और 0.01 तक. so that means सपोज ऐसा रीडिंग दिया गया है, तो that means ये ऐसा कुछ अच्छा स्केल से मेजर किया गया है which has a least count of मतलब एरर, उसमें एक्यूरेसी जो है 0.01 तक है. ये यहाँ पे अनसर्टेनिटी इसमें होगा, ये वाला परफेक्ट है, ये इस वाले डिजिट में अनसर्टेनिटी है. सो इट हैज अ एरर ऑफ जो है, जो भी हो सकता है, प्लस माइनस 0.01 ना, 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट. ओके, नेक्स्ट पेज प्लीज. यस ईशान, हाँ नेक्स्ट पेज प्लीज. यस, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है. रूल, ठीक है, रूल्स लिख लेते हैं. फर्स्ट वन, let us write the rules now. So what is the first one? All zeros, all non-zero digits are significant. Then guys, second वाला भी लिखना है. So second, all zeros between two non-zero digits are significant. All zeros between two non-zero digits are significant. Third one, rule 3. Trailing zeros after decimal place are significant.
trailing zeros after decimal place are significant. Guys, this one done? Yeah. Yeah, okay, Shyam, please scroll down. Where rule 4. If the number is less than 1, all zeros after decimal point, number is less than 1, and to the left of first non-zero digit are significant. All zeros after the decimal place, number less than 1. All zeros after the decimal place to the left of first non-zero digit are insignificant. ये सब insignificant होगा. फिर क्या लिखा है? That next rule 5. The terminal or trailing zeros in number without a decimal point are not significant. Should I see that? Okay. Next one. Yes, on next one. Ishan, next one. Oh, there are certain types of measurement which are exact. So, जैसे जो है suppose तो इसमें जो है number of significant figures in those type जो है, so this type of is infinitely accurate, so it has infinite significant figures.
ठीक है गाइस, फिर आज जो है इसमें रूल्स में फिर इतना ही करते हैं, विल कंटिन्यू इसके यहाँ से. सो गाइस टुमारो वी हैव अ डाउट क्लास ना. Yes. Tomorrow we have a doubt class and also we have class on Saturday also. ठीक है. Yes. ठीक है. Okay guys, we practice this one. Guys हाँ थोड़ा फ्रिक्शन के लिए भी अच्छे से TWD के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay students. Then we'll continue in the next class. Thank you all. Bye, sir. Thank you, sir. Bye students. Thank you, sir. Thank you students. Bye all. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you.